everyone, good evening. This is Shefali Singla. Welcome to TestBook, and here we are going to restart our preparation with JRF. तो JRF क्रैक करने के लिए रेडी हो जाइए. हम अपनी प्रिपरेशन को दोबारा से करेंगे. जिन लोगों का स्पेसिफिकली जिन लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, लेट्स सी कि क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम आई है और कहाँ पे हमारी तैयारी में कमी रह गई है, तो उसे इम्प्रूव करने के तरीके क्या हैं. सो चलिए सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हम इस सीरीज में, जो सीरीज में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, इस सीरीज में हम क्या करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम कुछ पेपर्स के क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करेंगे, ये समझने के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एंड अकॉर्डिंगली वी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द जून 2024 एग्जाम. Okay, so first of all, we'll be coming up with 5 to 10 sessions in which we will be learning the concepts through the questions. ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है ये समझने के लिए कि क्वेश्चन क्या आया था, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या था, आपकी अप्रोच क्या थी और सही तरीका क्या फॉलो कर सकते हैं. ओके, तो कुछ लोग सेशन ज्वाइन कर चुके हैं. आई होप ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो towards the end of the session I'll be discussing the schedule कि जो हम ऑलरेडी अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं कि उस तैयारी में हम क्या स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं और किस तरीके से हम लोग सिलेबस को कवर करेंगे और किस टाइम पे हम डेली मिलेंगे. ओके, सो आर यू रेडी फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस? Quickly give me the confirmation. जो लोग सेशन ज्वाइन कर चुके हैं, quickly give me the confirmation. Are you all ready? So we just have to solve the questions. It will be a short session for like 40 to 45 minutes. Apart from that, in case if you have any doubts or queries, feel free to write in the chat section. Definitely, I'll respond to your queries. Very good evening, Devraj. Good evening, Samu. All right. So let's move on to the first question. This is from algorithms based on recurrence relation. जब हम सिलेबस करते हैं उस टाइम पे क्लियरली आपको बताया जाता है कि रेफरेंस रिलेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीके हैं: सब्स्टिट्यूशन मेथड, मास्टर्स थ्योरम एंड रिकर्सिव ट्री मेथड. वी आल्सो कवर्स एक्सटेंडेड मास्टर्स थ्योरम. बेस्ट मेथड टू सॉल्व द रेफरेंस रिलेशन इज मास्टर्स थ्योरम. बस मास्टर्स थ्योरम में कुछ लिमिटेशन है. हम अगर जो रेफरेंस रिलेशन दिया हुआ है, if that is given in the format, if the conditions are satisfied, then directly we can apply the Master's theorem. Otherwise, we'll look for substitution method or recursive tree method, right? So this is the first question. What's the answer for the first question? Simply, it's based on solving the recurrence relation. Can I apply Master's theorem over it? Can we use Master's theorem? Recurrence relation is given as T of M is equal to T M by 4 by 3 plus 1. 1A or 1C. What is that? मतलब आंसर A है या C है? You are not sure. We want the sure answers. एग्जाम में हम ऐसे अनश्योर आंसर्स नहीं दे सकते कि आंसर A या C हो सकता है. हमें यही कंफ्यूजन को दूर करना है. So as already discussed, we have 3 ways to solve this recurrence relation: recursive tree method, substitution method, or Master's theorem. But the preferred method is the Master's theorem. Can somebody tell me that what are the conditions for applying the Master's theorem? Master's theorem. I'll be using Master's theorem. Okay, that is the shortcut way to solve this recurrence relation. मास्टर्स थ्योरम हम कब अप्लाई कर सकते हैं? जब आपके पास कोई रेफरेंस रिलेशन है इन द फॉर्म, फॉर एग्जांपल टी ऑफ एन इज इक्वल टू ए टी एन बाय बी प्लस सम फंक्शन इज गिवन टू यू. दिस शुड बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन. अगर आप लॉगरिथमिक ले रहे हो तो इसका मतलब हम एक्सटेंडेड मास्टर्स थ्योरम यूज करेंगे. आई एम गोइंग टू कवर द कॉन्सेप्ट ऑफ simple basic Master's theorem. Master's theorem is applicable if
A is greater than or equal to 1, A की वैल्यू 1 हो सकती है, बट अगर B की वैल्यू 1 हो जाएगी, B should also be greater than 1, and here the condition is कि B strictly greater than 1 होना चाहिए. Strictly greater than 1 क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर B की वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, फंक्शन किस में रिड्यूस हो जाएगा? इट विल बी लाइक, आई एम राइटिंग हियर, T of n is equal to AT n. If b is equal to 1, this will be atn f of n. और हमें ये मालूम है कि जब आप रिकर्सिव फंक्शन कॉल करते हो तो जो पैरामीटर है, पैरामीटर की वैल्यू चेंज होनी चाहिए. Valid recursive call कब होती है? When the function name is same, number of parameters are same, but parameter value should change. If the parameter value is not changing, अगर parameter value change नहीं हो रही तो आपका function infinite loop में चला जाएगा and it will never produce the result. Right? So that is why b should be strictly greater than 1. Check कीजिए यहाँ पे क्या ये condition satisfy हो रही है, and f of n should be some polynomial function. And f of n should be some polynomial function. Let us assume it is in the form of n raised to power k. अब यहाँ पे देखिए what is the value of a. अगर ये condition true है then we can apply Master's theorem. तो हम क्या कहते हैं, we find out the value for n raised to power log a with the base b, और उसके बाद हम compare करते हैं n raised to power k. Whatever is the greater function, that is the time complexity. अगर दोनों same है, tie को break करने के लिए we use log n. If both are equal, we use log n. n क्यों लिए? क्योंकि function is in the form of n. So this is the idea of basic Master's theorem. आप n raised to power log a b की value find करते हो and then you make the comparison. Okay? Let us apply this concept here. क्योंकि confusion था. Master's theorem apply कर सकते हैं. सबसे पहले हम ये check करेंगे. According to this recurrence relation, what is the value of a? इस recurrence relation के according a की value क्या आ रही है? Can somebody tell me that what is a here? A is 1. According to condition, a can be 1, a की value 1 हो सकती है. Then value for b, whatever is in the denominator, that is the value for b. B is 4 divided by 3. That means it is greater than 1. So it is greater than 1. तो second condition भी true होगी. And f of n is, or here variable is m, f of m is 1. इसको हम लिख सकते हैं m raised to power 0. Correct? तो इसका मतलब हम मास्टर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. सो ऑन दिस रेकरेंस रिलेशन मास्टर्स थ्योरम इज एप्लीकेबल. वी हैव चेक फॉर द कंडीशंस. मास्टर्स थ्योरम इज applicable. So apply the Master's theorem. For this, what we need to do is we'll find out the value for log a with the base b. M raised to power log a is what? That is 1. B is 4 by 3. 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 can be written as किसी भी टर्म की पार्ट जब 0 होती है, that is going to return 1. This is 4 by 3. Now, according to the logarithmic formula, this will come before the logarithmic term. और जब base same होता है, that results into 1. We know that log a with the base a, this is 1. तो ये टर्म आपके पास 1 होगी. So it is coming out to be m raised to power 0, which is equal to 1. अगर देखा जाए तो this is equal to f of n. ये कौन सा केस बन गया? यहाँ पे टाई वाला केस बन गया. So in order to break the tie, हम क्या करते हैं? We use the logarithmic term. तो it is theta of f of n into log m. F of n is 1. तो simply आपके पास क्या आ गया? Log m. So answer for this question is it's theta of log m. I don't know from where you are getting this term m. जिसने रुद्र आपने बोला है कि 1 c भी हो सकता है. c cannot be there because
m वाली टर्म नहीं आएगी आपके पास, इट इज सिंपली log m. So you can expect straightforward question based on the recurrence. So you should know the concepts of solving the recurrence. There are three methods. Try to solve the practice questions on the recurrence relation. I'll be taking a session on solving the recurrence relations using substitution method, using Master's theorem, using recursive tree method. Is this clear to everyone? Have you got an idea? I don't know which method you had used during your exam to solve the recurrence relation, but definitely if Master's theorem is applicable, we'll go with Master's theorem. Guys, quickly give me the confirmation if it's clear. Let's move on to the next question. This is from data structures. So basically, I'm taking the questions in this session from Unit 7, that is data structures and algorithms. So this is from data structures, and this question is based on the concept of heap tree. Heap tree. किसी भी ट्री को हम हीप ट्री कब बोलते हैं? When it's a almost complete binary tree और heap property satisfy कर रहे हैं. यानी कि जब हम heap tree की बात करते हैं तो we talk about two properties, structure property and order property. अगर structure property fulfill होती है then only we go for the order property. Order property means अगर आपको max heap tree बनाना है तो max heap property should be satisfied. Max heap property क्या बोलती है? Parent should be the maximum, यानी कि parent की value दोनों children से ज्यादा होनी चाहिए. If we are talking about the min heap tree, तो इसका मतलब min heap property satisfy करवानी है. That means कि parent की value दोनों children से कम होगी, यानी कि parent और दोनों child को मिला के parent will be the minimum. Okay. अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? वी हैव टू कंसिडर एन एरे. आपको जो हीप ट्री है दैट इज गिवन इन द एरे रिप्रेजेंटेशन. अब इस एरे से आपको हीप ट्री बनाना है. आफ्टर बिल्डिंग हीप फ्रॉम द एरे ए, after building heap from the array A, the depth of the heap and the right child of max heap are. तो आपको क्या बताना है? आपको दो वैल्यूज बतानी है. तो सबसे पहली चीज क्या करनी है? वी नीड टू कंस्ट्रक्ट द हीप ट्री. Can somebody tell me that how many methods are there, how many ways are there to create a heap tree? आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं. हमारे पास दो मेथड्स हैं. आप एक एक करके एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं और दूसरा तरीका के वी कैन यूज द बिल्ड हीप मेथड. बिल्ड हीप मेथड में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है. अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, nothing is given in the question, then by default definitely we'll go with the build heap method. By default हम build heap method क्यों यूज कर रहे हैं? Because ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज द लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज ऑर्डर ऑफ n. If n elements are there, और अगर आप one after another method use करते हो, then the time complexity is n log n. So definitely linear time complexity is less, so we'll go with the build heap method. So first of all, we need to create the heap tree, max heap tree. क्वेश्चन में आपको max heap दिया हुआ है. सबसे पहले हम max heap tree बनाएंगे using build heap method. So I'll be using here build heap method. Build heap method. मैम क्लास का टाइमिंग मैं सारी सेशंस का टाइमिंग डिस्कस करूंगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन. अगर सिर्फ यूट्यूब का सेशन का टाइमिंग जानना है तो दैट इज 6:30 PM. कल से 6:30 होगा. मंडे एंड ट्यूसडे विल बी ऑफ. ओके. सैटरडे एंड संडे हम लोग क्लास रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे, क्योंकि सैटरडे और संडे को हम लोग फ्री होते हैं. तो लेट्स यूटिलाइज दैट टाइम ऑन वीकेंड्स. ओके. So tomorrow onwards, we will be having the sessions at 6:30 PM. Can somebody tell me that how to create the build heap, create the max heap tree using the build heap method? Build heap method जब हम use करते हैं तो what we do is हम सारे elements को एक ही shot में add करवा देते हैं. So first element will be the root. Next element आ रहे हैं 1, तो it will be going to the left side. Next element will be going towards
द राइट साइड, फिर ये लेवल फिल हो गया, इस लेवल पे और कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं है, सो विल गो टू द नेक्स्ट लेवल. सो हियर इज द एम्प्टी स्लॉट 2, देन इज 16. मैं अभी हीप प्रॉपर्टी चेक नहीं कर रही हूँ. हीप प्रॉपर्टी हम कहां से चेक करनी शुरू करते हैं? फ्रॉम द फर्स्ट इंटरनल नोड. 9, 10, 14, 8 and 7. I have added all the nodes in the tree. Now we'll start heapify the tree. Tree को heapify करना कहाँ से शुरू करते हैं? From the first internal node. So if you check here from the last node, is this the internal node? No, no, no. So first internal node is 16. Check whether 16 is greater than its children. 16 का एक ही child है 7. 16 is greater than 7. So this is okay. देन गो टू द नेक्स्ट नोड. यहाँ पे बिल्ड हीपिफाई में अगर आपको बिल्ड हीप मेथड में अगर आपको ध्यान में होगा तो हम यहाँ पे एक फॉर लूप यूज करते हैं. फॉर लूप कहाँ से शुरू होते हैं? फ्रॉम द फर्स्ट इंटरनल नोड, राइट? सो हियर we have next element 2. Is this satisfying the heap property? 2 is greater than both of its children? No, 2 is smaller than both of its children. तो पेरेंट एलिमेंट कौन सा होगा? अगर मैक्स हीप ट्री है तो पेरेंट पे कौन सा एलिमेंट आएगा? इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी. मैक्सिमम वैल्यू इज 14, so we will be swapping 2 with 14. So we'll swap 2 with 14. Okay, now this tree is heapified. Go to the next internal node. So that is 3. 3 is greater than both of its children? No, same process apply करना है. Parent should be greater than both of its children. So 10 को हम swap करेंगे 3 के साथ. 10 will be swapped with 3. This is heapified. कहीं पे कोई disturbance हुई? No disturbance is there. Go to the next node. 1. 1 is greater than both of its children? No. So which element is greatest, 14 or 16? It's 16. So we'll swap 1 with 16. अब इसको यही नहीं छोड़ सकते क्योंकि जब आपने स्वैप करवाया 1 और 16 को, 1 आया, 1 के नीचे भी एक ट्री बन रहे. इट शुड ऑल्सो बी अ मैक्स हीप ट्री. क्या 1 इज ग्रेटर है अपने चाइल्ड से? नो, 7 इज ग्रेटर. सो वी नीड टू परफॉर्म वन मोर स्वैप हियर. दो इस क्वेश्चन में आपसे डेप्थ पूछी गई है ट्री की एंड दे आर आस्किंग फॉर द राइट चाइल्ड ऑफ द मैक्स हीप ट्री, बट इन द एग्जाम दे मे आस्क फॉर द नंबर ऑफ स्वैप्स. जब मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स पूछते हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स आर रिटर्न्ड बाय बिल्ड हीप मेथड. ओके, so here this tree is now adjusted. Now go to the root level, root node. So this is 4. 4. 4 is greater than both of its children? No, 16 is greater. So here we'll be getting 4 and 16. क्या इसके नीचे वाला ट्री एडजस्टेड है? 4 और 14 स्वैप होंगे. सो हियर विल गेट 14 और यहाँ पे 4 आ गया. 4 is greater than both of its children? No. Again we need to perform one more swap. Here we got 8. So finally this is the resultant heap tree. आपके पास 16 root node है, मैं यहाँ पे clearly लिख रही हूँ. Then we have 14 to the left and 10 on the right. Then 8 on the left, 7 on the right, 9, 3, 2, 4 and 1. अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया था आपसे. एक तो डेप्थ पूछी गई थी और क्लियरली आपको बताया हुआ है कि रूट का जो लेवल है दैट इज root is at level 1 or level 0. So if this is at level 0, this will be at level 1, this will be at level 2. Although अगर सिर्फ लेवल पूछा होता आपसे तो आपको हीपीफाई करने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि एनी हाउ जब आप स्वैपिंग करोगे देयर विल बी नो चेंज इन द नंबर ऑफ लेवल्स. ओके, सो दिस इज level 3. So what is the depth of the tree? So here depth of the heap tree is 3.
तो इसका मतलब पहले ही स्टेप पे आपके पास ऑप्शन सी और डी एलिमिनेट हो गए, सो इट इज 3. नाउ इट इज आस्किंग फॉर द राइट चाइल्ड ऑफ द मैक्स हीप. मैक्स हीप ट्री में राइट चाइल्ड कौन है? इट इज 10. राइट चाइल्ड इज 10. So correct answer for this question is it's option B. बच्चे सी तो सबसे पहले ही स्टेप पे एलिमिनेट हो गया, इनफैक्ट बिना हीपीफाई किए आप सी को एलिमिनेट कर दोगे क्योंकि डेप्थ कितनी बन रही है? दैट इज 3. रूट इज एट लेवल 0. दिस वाज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. एमसीक्यू क्लास होगा मैम, डेफिनेटली एमसीक्यूज भी होंगे और कॉन्सेप्ट्स भी होंगे. इट इज आस्किंग फॉर द राइट चाइल्ड. लेफ्ट चाइल्ड इज 14. अगर लेफ्ट चाइल्ड पूछा होता देन इट will be A, but since it's asking for right child, so it is option B. Okay. So correct answer for this question is option B. So this was directly asked from heap tree concept from data structures. Next question, very, very easy, very, very simple question. Just give it a try. Here, this is based on the concept of hashing. Collision resolution technique used in this question is linear probing. That means अगर कोई भी दो elements same hash address produce करते हैं, then the collision will be resolved using the linear probing. So here collision resolution technique CRT used is linear probing. Linear probing means जो भी actual address है उसका next available slot देखना है, जो भी free slot मिलेगा element will be placed at that location. And here the hash function used is डिवीजन मॉड्यूलो मेथड. जब हम हैशिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे भी मैंने बताया था कि मेजरली जो क्वेश्चन आता है हैशिंग में से दैट इज बेस्ड ऑन द फंक्शन डिवीजन मॉड्यूलो मेथड एंड कोलिशन रेजोल्यूशन टेक्निक. मेजरली जो क्वेश्चन आता है वो लीनियर प्रॉबिंग का आता है. ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इट्स बी, 5. यस, 5 इज द करेक्ट वन. ऑल्दो आपने डायरेक्टली ट्राई किया होगा. 18 mod 7. तो डिवीजन मॉड्यूलो मेथड मॉड 7 है, इसका मतलब हैश टेबल में आपके पास 7 स्लॉट्स विल बी अवेलेबल. हैश एड्रेस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0. जैसे हम एरेज में बोलते हैं बाय डिफॉल्ट एरे इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0. सो 7 स्लॉट्स है तो इसका मतलब हैश एड्रेसेस की रेंज होगी 0 to 6, 2, 3, 4, 5 and 6. This was a pretty straightforward question. सिर्फ आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है. So you are given that hash function is key mod 7. So first key that you are given is it's 44. So h of 44 will be 44 mod 7. मॉड फंक्शन का मतलब क्या होता है? जो भी डिवाइड करने के बाद आपके पास रिमाइंडर आएगा वी हैव टू कंसिडर द रिमाइंडर. सो 7 को जब आप 44 से डिवाइड करोगे 42 कंप्लीटली डिवाइड होता है, राइट? तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 42 तक ठीक है, रिमाइंडर इज 2. दैट मीन्स key 44 will be going under the slot 2. Next 45. 45 45 mod 7, that is 3. slot free है, कोई collision नहीं हुई. collision resolution टेक्निक हम तब यूज करते हैं जब collision होगी, राइट? किसी भी चीज को हम कब रिजॉल्व करते हैं? जब प्रॉब्लम आएगी. जब प्रॉब्लम ही नहीं आई तो रिजॉल्व कैसे करेंगे? सो एज ऑफ नाउ वी आर नॉट कंसिडरिंग लीनियर प्रॉबिंग बिकॉज अभी तक कोई collision नहीं आई है. देन इज 79. 79 mod 7. 7 into 11 is 77. तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना बचा? 2. collision आ गई.
अब कोलिजन आ गई तो हमें कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक यूज करना है, क्योंकि जब स्लॉट 2 पे गए यहाँ पे ऑलरेडी कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है। लीनियर प्रॉबिंग यूज करना है। लीनियर प्रॉबिंग मींस विल चेक फॉर द नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट, फिर से कोलिजन हुआ, check for the next available slot. The slot is free, so for this is 79, so 79 will be placed here. Take the next element, that is 55. 55 mod 7. 55 mod 7. So 49 से completely divide होता है. After that it's producing the remainder 6. So we'll check for the slot 6. Slot 6 पे कोई collision नहीं है, so we'll be storing the element 55 here. I'm so sorry. 55. Take the next element 91. तो इस तरीके से आपको सारे elements check कर लेने. 91 mod 7, that comes out to be it's completely divisible 0, so 91 will be stored here. Then is 18. 18 mod 7. 7 twos are 14, so remainder is 4. We'll go to slot 4. For fourth slot is full, that means collision आ गया. Collision resolution technique use करेंगे. We'll go to the next slot. Next available slot is 5. So 18 will be stored here. आपको 18 बताना था, complete करने की जरूरत नहीं है. So it is available at slot 5. Okay. इसी तरीके से आप 63 के लिए चेक कर सकते हो. So 63 will be going there. This is the complete hash table. But आपको complete बनाने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ और सिर्फ 18 की लोकेशन बतानी थी. This is stored at the location 5. So option C is the correct answer. Easy. मेजरली आप जितने क्वेश्चंस उठा के देखेंगे, मेजॉरिटी क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन द डिवीजन मॉड्यूलो मेथड. हैश फंक्शन जो यूज होगा दैट विल बी डिवीजन मॉड्यूलो मेथड, एंड कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक इज लीनियर प्रॉबिंग. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. अब हम एल्गोरिथम्स में there are lot many algorithm designing techniques available like divide and conquer, greedy technique, dynamic programming and so on. तो हर टेक्निक के अंदर हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं. वन ऑफ द एप्लीकेशन under greedy technique is single source shortest path. So in order to solve single source shortest path, how many methods are available? How many algorithms are available? Single source shortest path. This is an application of greedy technique. आपको एप्लीकेशंस और उनके एल्गोरिथम डिजाइनिंग टेक्निक्स पता होनी चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं. तो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ is an application of greedy technique. And what algorithms are available for finding the single source shortest path? There are two algorithms available. One is Dijkstra's algorithm. Dijkstra's algorithm for finding single source shortest path, and Bellman-Ford algorithm. Bellman-Ford algorithm. Check for the options. Prim's algorithm, this is for minimum cost spanning tree. ये minimum cost spanning tree के लिए use करते हैं. This is also an application of greedy technique. Floyd-Warshall algorithm, ये shortest path के लिए होता है, but this is used for all pairs shortest path. All pairs shortest path. Then Johnson's algorithm we don't use for finding the shortest path. Dijkstra's algorithm is one of the algorithm for finding the single source shortest path. So correct answer for this question is it's option D. Any doubt? Straightforward question था. Greedy technique की एक application का आपसे algorithm पूछा गया था कि इस application के लिए कौन सा algorithm use होगा. Any doubt? Ma'am, please share the PDF. Definitely, Nandi, I'll share the PDF in the Telegram group. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं की है,
फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारी क्लासेस के अपडेट्स, पीडीएफ्स सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाए. ओके, सो आई होप इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट वन, अ टेक्स्ट इज मेड अप ऑफ द कैरेक्टर्स. आपको 5 कैरेक्टर्स दिए गए हैं, each occurring with the probability. You are given with the probability. We know that the sum of all the probabilities is 1. तो जब आप sum लेंगे, it is coming out to be 1. The optimal coding technique will have the average length. Can you tell me that this question is based on which application? Algorithms का question है, यूनिट 7 का question है. कौन से algorithm पे based है ये? Do you want to give it a try? Algorithms, this is based on Huffman coding. Again, Huffman coding. Again, this is from greedy technique. Greedy technique. Huffman coding का जो concept है, this is based on the binary tree construction. और यहाँ पे हम idea क्या use करते हैं? We are constructing the binary tree by starting from the first two minimums. Every time we'll be adding two minimums. और क्योंकि यहाँ पे हमें कोड जनरेट करना है, क्योंकि ये कोडिंग टेक्निक है, तो यहाँ पे हम आइडिया क्या यूज करते हैं? कीप द स्मॉलर टर्म्स. जो नोड की वैल्यू कम है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, जो ग्रेटर है विल कीप दैट ऑन द राइट हैंड साइड सो दैट वी कैन इजीली असाइन द कोड्स. ओके, तो या तो लेफ्ट साइड पे आप सारे लेफ्ट चाइल्ड को असाइन 0, राइट चाइल्ड को असाइन 1, और राइट साइड पे असाइन लेफ्ट साइड पे असाइन 1 एंड राइट साइड पे 0. बट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज नॉट अलाउड, क्योंकि जब हम कोड जनरेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली डिकोड करने के लिए भी हमें सेम कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है. सो दैट इज व्हाई इट शुड बी क्लियर दैट ऑन विच साइड व्हाट वी आर गोइंग टू कीप. बिगिनर सीरीज मैम डेटा स्ट्रक्चर से स्टार्ट हुआ. विल स्टार्ट विद डेटा स्ट्रक्चर्स. ओके, so that's why I'm taking the questions from data structures and algorithms. तो इसलिए जो हम concepts करेंगे, we'll discuss the important concepts from data structures and algorithms on YouTube. Detailed course के लिए we have started our course on super coaching, so you can have a look over that. Okay, तो detailed course आपको super coaching पे मिलेगा, and important concepts will be covered on YouTube. और इसके बाद जो हम questions करेंगे, after having a good base, then we'll be solving the questions on master classes. कोई भी join कर सकते हैं, it is free for everyone. Okay, so how to start with this? So आपको 5 characters दिए हुए हैं, A B C D. A B C D E. Probabilities are given as A की probability is given as 0.08, B is 0.40, 0.25, 0.15, 0.12. Since every time we need the two minimums, तो हम क्या करते हैं? We arrange these probabilities in the ascending order. So I'm going to arrange these characters on the basis of their probabilities. So minimum value is 0.8, that is for A. 0.08. Then next minimum is for E, that is 0.12. Then next minimum is for D, that is 0.15. मैं क्या कर रही हूँ? ये जो probabilities है इनको ascending order में sort कर रही हूँ. Next is for C, that is 0.25. Then is for B, that is 0.40. Now start constructing the binary tree. We'll start from the first two minimums. It is A and E. I'll be keeping the smaller value on the left hand side. Smaller value को हम left hand side पे रख रहे हैं. So this is 0.08. ये किसकी value है? A के लिए. Then for E, this is 0.12. Greater है. Now merge these two.
0.08 plus 0.12, this comes out to be 0.20. So we have taken these two values. 0.20 कहाँ पे आएगा? Somewhere here. 0.15 के बाद और 0.25 से पहले 0.20. Take the next two minimums, यानी कि 0.5 लेंगे और 0.20 लेंगे. 0.515 स्मॉलर है. स्मॉलर नोड को कहाँ पे रख रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे. सो आई विल बी कीपिंग दिस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. 0.15. This is for D. Again, combine them. It comes out to be 0.35. Next two minimums ले लिए. 0.35 यहाँ पे कहीं पे आएगा. Take the next two minimums. So I'll be taking 0.25 and 0.35. 0.25 smaller है, so it will be on the left hand side of 0.35. This is for 0.25. ये probability है character C की. Merge, we get here 0.60. First two minimums delete हुए. 0.60 कहाँ पे आएगा? Here. Take the next two minimums. 0.40 is smaller than 0.60. 0.40, this is for B. इनको merge कर देते. Space यहाँ पे कम है, तो I'm writing here. So it is 1. हमें मालूम है total probability 1 होती. अब यहाँ पे आपसे कोड्स नहीं पूछे, ऑल्दो आप कोड्स जनरेट कर सकते हो, बट हम एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. हमें सिर्फ क्या चाहिए? हमें लेंथ फाइंड करनी है, एवरेज लेंथ. तो एनी हाउ इफ दिस इज 0 1 0 1, लेफ्ट चाइल्ड को आई एम असाइनिंग 0, राइट चाइल्ड को आई एम असाइनिंग 1, लेफ्ट चाइल्ड को आई एम असाइनिंग 0, राइट चाइल्ड को आई एम असाइनिंग 1. आपके पास ए कैरेक्टर्स हैं, ए बी सी डी ई. ए का कोड क्या है? ए इज हियर. स्टार्ट फ्रॉम द रूट नोड. चेक करो कौन सा पाथ फॉलो करके आप ए पे पहुंचोगे. 1, then right side and then left side. So it is 1 1 1 0. So code for A is 1 1 1 0. Although I need not to write these codes. अगर आप कोड्स लिखते हो, आपसे सिर्फ लेंथ पूछिए, कोड्स की बात ही नहीं किए, तो फॉरगेट इट. आप सिर्फ लेवल्स चेक कर लीजिए, लेवल के अकॉर्डिंग आपको कोड मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डायरेक्टली लेवल्स पे जाते, रूट से फर्स्ट लेवल पे गए, तो इसका मतलब कोड लेंथ, यहाँ पे जो भी कैरेक्टर्स होंगे उनकी कोड लेंथ क्या होगी? 1 बिट इज रिक्वायर्ड. नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, एक और एज इंक्लूड होगी, सो 2 बिट्स. नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, will be having 3 bits. Next level पे will be having 4 bits. Already आप चेक कर सकते हो, A के लिए आपके पास कितनी bits आ रही है? We are getting 4 bits. Correct? और A आने की probability के 0.08. Are you getting this point? So directly you can write the bits required. B के लिए 1 bit is required. 1 bit. And probability of B is 0.40. C के लिए 2 bits are required. Probability of C is 0.25. Similarly, for D, 3 bits are required. Probability is 0.15. For E, 4 bits are required. Probability is 0.12. तो मेरे को यहाँ पे कोड्स लिखने की जरूरत नहीं थी, बट कई बार कोड्स के बेसिस पे क्वेश्चन आ जाते हैं. लेट्स राइट द कोड्स एज वेल. फॉर बी, रूट से आपको सिर्फ एक ही एज कवर करनी है, एंड दैट एज इज असाइन्ड विद 0. फॉर सी, यू नीड टू कवर 2 एजेस. स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट, इट्स 1 एंड देन 0. फॉर डी, 1 1 एंड 0. आपको रूट से स्टार्ट करके जिस भी नोड पे जाना है, उसके बीच में जो भी एजेस आ रही हैं, उन एजेस को जो भी वैल्यू आपने असाइन की है, कंसिडर दैट वैल्यू. फॉर ई, इट विल बी 4 times 1. So 4 bits, 1 bit, 2 bits, and so on. इसके बाद आप कैलकुलेट कर लीजिए. 4 into 0.08, it is 0.32, 0.40,
0.50, 0.45, 0.48. Take the sum. It's 15, 10, 12, and 8, and 1.2. So 2.15, that is nothing but it is option D. Make sense? So basically, the concept of Huffman coding is based on the concept of binary tree construction. We are going to construct the binary tree. Binary tree means at a time we'll be merging two nodes. In fact, Huffman coding का एक और application है, similar application is there, that is optimal merge pattern, right? So we can expect a question on the basis of optimal merge pattern as well. तो उसमें भी idea same है. Every time we'll be taking out the two minimums, merging them, and then we'll be taking the next two minimums and so on. Time complexity, हम सेशन जब कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, आई टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल. जितनी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हैं आपको याद करने की जरूरत नहीं होती है. इफ यू आर कंफर्टेबल विद द एप्लीकेशंस, easily you can determine the time complexity. Okay, so this is about today's session. So we'll be solving few more questions in the next session. So in the next session, again, we'll be discussing concepts through questions. I'll be taking the questions from Unit 7. Unit 7 means few more questions from data structures and algorithms. And algorithms. Okay. In case if you guys have any doubt, you can ask. Otherwise, we'll end our discussion here. Let me discuss the schedule. So first of all, we are having three types of classes. One is the super coaching. In the super coaching, the whole syllabus will be covered in detail. So in order to finish the syllabus on time, we want to finish our syllabus before mid of May. So we are having two sessions every day, one in the morning and another session is in the evening. Duration of this session is 2 hours. So in the morning, we are having the session at 7:30 to 9:30 a.m. ये इसलिए रखा गया है ताकि जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स है जिनका कॉलेज होता है वो भी सेशंस अटेंड कर पाए. एंड एट इवनिंग वी हैव द सेशंस फ्रॉम 8 p.m. to 10 p.m. सो मॉर्निंग में एक सब्जेक्ट कवर करेंगे, इवनिंग में एक सब्जेक्ट कवर करेंगे. इस तरीके से पैरेलली आपके दो सब्जेक्ट्स चलेंगे. देन ऑन द यूट्यूब we'll be having the session at 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Okay. आज first session था, that's why there was an exception. And then we'll be having the master class in the evening as well. So जो first type की classes है super coaching, these are the paid ones, but these two are free. So any one of you can join these sessions. ओके. सो जो YouTube है ये वाली क्लास YouTube पे होगी और जो मास्टर क्लास है दिस इज ऑन ऐप. So master classes are on app and these classes are free. You need not to pay anything for the master classes. All right. So this is the schedule. Thank you so much, guys. This is all for this session. In case if you guys have any doubt, you can ask. So this is the schedule and definitely there is classes on Saturday. So every Saturday and Sunday we'll be having the sessions. Every Saturday and Sunday we'll utilize our time. Every Saturday and Sunday we'll have the sessions.
मैम ब्रेक चाहिए होता है ब्रेक दे देते, सो मॉर्निंग सेशन के लिए हम लोग ब्रेक रखेंगे ऑन थर्सडे. Okay, and for evening session we'll be having off on Monday and Tuesday. बाकी दिन दोनों दोनों क्लासेस होंगी तभी हम सिलेबस टाइमली कवर कर पाएंगे because we have 10 units, lot of syllabus is there. And yeah, next day BA concept class. तो ये जो बेटा मैंने स्केड्यूल बताया है दिस इज द स्केड्यूल फॉर पेपर 2 में भी कंप्यूटर साइंस का बताया मैंने स्केड्यूल, दिस इज फॉर कंप्यूटर साइंस. Learning the concepts through questions is good idea, or you want the concepts first and then questions? I guess it's good to understand what types of questions have been asked in the exam. और उसके बाद अगर हम एनालिसिस करके प्रिपरेशन करते हैं तो वो एक अच्छा तरीका होता है, एक अच्छा स्टार्ट होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक करने का. ओके, आई गेस देयर इज नो डाउट. जो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जिन लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो प्लीज रेफर टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है. यू कैन ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप ताकि आपके साथ लिंक्स शेयर हो पाए. अगर आपको सारे वीडियोस के अपडेट्स चाहिए, यू वांट टू फॉलो दिस सीरीज, don't forget to subscribe the channel, and definitely I'll would like you to like the video so that it gives me the motivation. Okay, motivation के लिए obviously video को like कीजिए if you like this session and you want more videos, similar videos on paper 2. Thank you so much guys, I'll see you in the next session. Till then, take care, bye bye.